As we approach the end game, things couldn't get more intense than this. Welcome back, folks. You are watching the eISL Season 2 brought to you by Notwin Gaming. And we are, like we said, right, approaching to the end of those league stages, and things are really getting over everybody's heads with the way these matches are going, with the kind of surprises that we are getting to witness. Of course, Sam Fix is joined along with TTR and TT. Few more days remaining before we find our top six clubs that just go on forward to the playoffs, and we have some three exciting matchups today. Which one are you most excited about? ऑब्वियसली जो आज का मेन इवेंट होने वाला है मेरे लिए एटलीस्ट वो होने वाला है मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एफसी गोवा, क्योंकि ये दोनों ही क्लब्स जिस तरीके से अभी तक परफॉर्म किए हैं उससे तो मुझे लगता है कि आज ये मैच जो है वो एकदम फुल पैसा वसूल मैच होने वाला है और दोनों अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके जाएंगे, क्योंकि आखिरी का कुछ मोमेंट है। एंड हम लोग शायद शुरुआत पे बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहे थे कि क्या कर पाएंगे कि नहीं इतने बेहतरीन तरीके से, बट फाइनली दोनों ही क्लब जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे। That though we will find out. That's already set in stone, and we have a few more things. But for all the new lovely viewers that have tuned in tonight for the first time, let's say we are having eISL Season 2 over here. Now the league stages are going on. It began from 28th of February and it go on till the 26th of April. So, like I said, we are approaching the end. Your team just have a few handful number of games, and only the top six clubs will head on now to the playoffs, and then onwards we also have the FGS slots for the winners. They're also gonna go head on. But talking about the moolah, the prize pool on the line, that is a whooping 33 lakh rupees, out of which whoever wins the eISL gets the first position, 4,50,000 rupees, and then as we move on ahead, the second place gets 2 lakh rupees, third and fourth share 75,000 rupees each. And this is where we've had different sort of battles brewing on, TT. To be honest, there's a battle for that top four. We are seeing 4-5 teams contesting for that. At least that first spot has been sort of sealed. It's been kept tight. FC Goa, they haven't dropped a game. And as we're talking about the storyline, let's take a look at the leaderboard itself to further have that visual aid so that we can explain you in a better manner. So like I said, right, we've got different battles coming out. So you've got the top four teams fighting time and again, at least the second, third, and fourth for that second spot. First spot right now, I think it's kind of untouchable unless and until FC Goa drop a game and they have a match tonight against Mumbai City FC. But we have got a few games where we see Kerala Blasters FC also coming into play. We've got Hyderabad FC. Hyderabad FC, I think, has to be TT one of the most talked about clubs, especially what they pulled off last time when they went against Bengaluru FC. That was something really that kind of made me go bonkers. But TT, about the schedule, let's take a quick look and find out about the matchups. फॉर श्योर आज का जो पहला गेम है वो होने जा रहा है केरला ब्लास्टर एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी के बीच में, जिधर अगर फॉर्म की बात किया जाए तो दोनों का ही अभी केरला ब्लास्टर की तरफ से फॉर्म धीरे धीरे आ रहा है और ऑन द अदर हैंड हैदराबाद एफसी थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में है। जो सेकंड मैचअप है आज का वो होने जा रहा है चेन्नई एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल एफसी, एंड जो थर्ड मैचअप होने जा रहा है आज का वो होने जा रहा है मुंबई सिटी एफसी एंड एफसी गोवा के बीच में, जो कि आज का मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी जिस तरीके से परफॉर्म किए हैं अभी तक, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उनके सामने जब आएगा एफसी गोवा जो कि अभी तक अनबीटेबल रहे हैं, क्या आज मुंबई सिटी एफसी इधर कुछ अलग करके जा पाएंगे? बट यस, हमारे जो फर्स्ट मैचअप है वो आ जाएगा आपके सामने एंड फिक्सेस हम देख पा रहे हैं कि आई थिंक इतने दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कुछ इस तरीके के गेम के, जिधर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स या फिर दोनों बहुत ज्यादा बेहतरीन फ्रेंड्स एक दूसरे के सामने भिड़ेंगे एक ही गेम के अंदर, और दोनों का ही फॉर्म बहुत शानदार चल रहा है, काइंड ऑफ मतलब धीरे धीरे आ रहा है। दो भाइयों के बीच आज होने वाली है टकरार दोस्तों, एंड दैट्स गोना बी द स्टोरी लाइन, राइट? लोकमान्यु वर्सेस जेनेसिड एफसी. In real life, they are the best of buddies, very close to each other, share literally everything. And at this point, now watching them go against each other, two of the veterans of the FIFA community, as you can say, they go way
back, right? At least 7, 8 years they've known each other. And then we've got Shubham and Watsi. And this is another matchup I do not want Hmm. to miss. Both of these players have that never give up attitude. And Shubham, Yeah. he's got that persona, right? He's got kind of like the Randy Orton of eISL. He's called the Viper, and then Watsi. He's like the John Cena. He never gives up. Has that mentality. And yes, you can't see him coming because Varsi last time he had his text mode on with that hoodie and worked out pretty well, especially when he Yeah. went up against his own brother, Shagnik, and just managed to win things through. But eventually things ended up in a tie. But what a match it Hmm. was. And I really hope that Watsi uploaded that video on YouTube because I'm pretty sure all the fans would be wondering how did he score that winner of a goal. But this matchup is going to be so exciting, to be honest, because I used to watch Genocide and Lokmanyu's matches. It was like some 2, 3 years ago, and it's kind of a nostalgia hitting right at me because these were the good old days, and finally getting these two players to watch, it's going to be an absolute delight, especially when you keep in consideration that both these players have sort of a similar style of play, right? They kind of Hmm. go for that slow build up, keep just outside the box. We see them Yeah. constantly passing the ball and then finding that opening where, kind of you beat your opponent on that play and then you tend Hmm. to score a goal. Genesis, the way I think he started his campaign in the ISL season 2, we saw that he had that extra flair bottom of the table. But lately, we have seen him, he's getting a few draws over there. Things aren't going his way, a few L's also. So today is the day where both these teams want to change things around. But if I have to ask about Lokmanu, what do you think Lokmanu has tonight that he can, just edge out against Genesis? What is your take on that? आई थिंक वही पार्ट कि यस वो एज अ ब्रदर बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं तो उनको पता है कि किस तरीके से ओपोनेंट को लाइक उनके जो ओपोनेंट पे अभी रहने वाले हैं आज जेनेसिड उनको तोड़ना कैसे है या फिर कौन सा जो वीक पॉइंट्स है वो होने वाला है तो ये तो एक रहेगा एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ रहेगा एंड मुझे लगता है कि जो फर्स्ट मैच है वो हम लोग को ड्रॉ पे ही खत्म होता हुआ दिख सकता है और जो लास्ट मैच है वो भी हम लोग को ड्रॉ पे खत्म होता हुआ दिख सकता है बट जो डिफरेंस है वो मुझे लगता है कि क्रिएट होगा कोऑप गेम के ऊपर क्योंकि कोऑप पे अभी तक अगर देखा जाए शुभम एंड लोकमेनु दोनों ने बहुत लाइक डे बाय डे इंप्रूवमेंट तो उनकी तरफ से आया है बट शुरुआत में क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा मिस पासेस हो रहे थे वो जब से लाइक इंप्रूव कर चुके हैं उसके बाद से बहुत ज्यादा कहने की अटैकिंग है बहुत ज्यादा खतरा वो बनाते हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं इधर हैदराबाद एफसी की तो ये वही क्लब है जो कि बेंगलुरु एफसी को 3-0 से कमबैक किया था वो भी आखिरी 10 मिनट पे तो उस जगह पे आके 3-0 से 3-all किया तो इससे तो पता चल रहा है कि कितना कुछ कर सकते हैं तो इनके अंदर जो मेंटलिटी है आज कौन कामली परफॉर्म कर पाएगा आज कौन समझ पाएगा कि उनके ओपोनेंट इधर क्या कर पा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं वही शायद एक एज दे के जा सकते हैं अदरवाइज मुझे तो लगता है कि शायद के साथ खत्म होगा ये पूरा फिक्सचर these two players, right, Lokmanu and Genesis, are so close that they literally know what the other person is going to do. And I yeah think they even traveled to Qatar for a tournament also together. So they are very tight with each other. So it's going to be an interesting matchup, and it's going to be a little personal also because, of course, you might be brothers and everything, but when you're going up against each other, it comes down to that personal yeah pride, right, where you want to be the better player because both these players have got that competitive spirit in them. No matter you might be my bro outside the game, but once you are inside the field, you are my opponent, and that is the way yeah this these two players are gonna approach. And lately we have seen, Lokmanu initially when he came into season 2, his defense kind of looked a little off the pace. I'll be honest. I mean, I think I am the closest to Lokmanu from the Casas community. He's like a brother to me, and we have also had that opportunity to share a desk with him. I hope I get him also someday pretty soon. Join with us, and just by telling about joining with us and sharing some insights, folks. Today we have a surprise for you. We have a very special yeah guest joining in with us, and he's gonna be sharing his insights,
on the game, because we also felt that we want to know from the community. So we got in a few players from the community. We're in touch with them. We're planning to get them daily over. So if you are from the community and you have a story to share, or some tidbits about the game, then do hit me up on Instagram. And don't forget, I'll just hit you, and you can tell me all your stories, and we would love to see your take on these games, because TT, honestly, it's always better to have a pro player's perspective, because there's so many bits and bits, so many nuances happening, and I'm pretty sure we're gonna have a really good time tonight. We're not gonna reveal who he is. या फॉर श्योर एंड मुझे तो लगता है लाइक हम लोग का कन्वर्सेशन जो चल रहा था कुछ देर पहले, रिवील नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ टाइम के बीच में इतना कुछ हम लोगों को जानने मिला कि अभी क्या चल रहा है, मेटा एंड ऑल, तो बहुत कुछ आई थिंक मुझे लगता है ऑडियंस के लिए आज बहुत कुछ है। और सिर्फ आज ही नहीं, कोशिश जैसे कि आपने कहा कि कोशिश किया जाएगा कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही और भी प्लेयर्स को लेके आते रहे। कौन है वो तो हम लोग आप लोगों को बाद में भी बताएंगे, बट आज का जो ये गेम है फिक्सेस, आपको क्या लगता है? लाइक शुरुआती में जैसे हम लोगों को पता है कि दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले हैं, एंड वो कहीं ना कहीं जो है अभी के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो हम लोग देख चुके हैं कि यस दोनों का किस लेवल पे है। क्या आज कुछ चेंज होगा गेम स्टाइल पे? क्योंकि दोनों का जब सिमिलर स्टाइल है, तो क्या कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर इधर दोनों में से कोशिश करेंगे कि यस थोड़ा सा स्टाइल को चेंज किया जाए, कुछ सरप्राइज दिया जाए? That is bound to happen. If that does not happen, then I'll be surprised, because both these players have got some really big brain plays, and Lokmanu has even acted as a coach in the international events representing India also. And Genesid, we know of his accolades, right? He used to play for M10, a club that was owned by Mesut Ozil, and you can see that. I'm not lying. You can check out his Instagram. He's got that blue tick verification also. And plus, when he comes into play, you can see those two jerseys there. So that's, I think, Mesut Ozil's jersey. And so we know that these two players have made it big in their careers already. Being from India, they have gone to places, they've represented the country, and they have achieved wonders. But today, when they're going up against each other, like I said, it's time and again I'm bringing in this brotherhood over here, because they've played with each other so much that they're well aware. Even if you have them on blindfolds, they can tell what the other person is doing. So this is where both of them have to go out of the box a little, try something else. Maybe we get to see a few German crosses from Lokmanu. Maybe we can get to see a beautiful driven pass that DK did yesterday and win a game. Or it could be Genesid. Genesid also, I feel, Genesid has that little edge where, he knows how to keep his calm inside the box with those skill moves suddenly. You see, right? You see when Genesid scores a goal, it's like a wow moment. Oh my God, Genesid has done this. And Lokmanu, he has to beat it. Because, of course, he being one of my brothers, there is that little part of my heart that would want Lokmanu to win. But when you look at the stats, when you look at the score lines, you know that Hyderabad FC are the favorites over here. So, but Kerala Blasters FC, they've done this in the past. They have got the potential on pen and paper. They can do this. But there was another thing, TT, that was raised. That is the co-op matchup. And the guest who's going to join us did mention that, this season's eISL fixes is primarily on co-op. Whichever club is strong in their co-op game, they have the best chance of winning. And how much do you agree by what he said? आई थिंक यस, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि देखिए इंडिविजुअल गेम्स पे आपके पास दो लेग्स हैं, लाइक दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, दो प्लेयर्स पे दो इंडिविजुअल गेम हो गया, जिसमें से एक प्लेयर हम लोगों को दिख रहा है यूजुअली कि वो जीत रहे हैं और जो दूसरा प्लेयर है वो थोड़ा बहुत डाउन जा रहे हैं। जिस क्लब का दोनों ही प्लेयर बहुत शानदार खेल रहे हैं उनका तो ऑब्वियसली पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे बैठे हैं, बट जो क्लब्स अभी टॉप पे नहीं है या फिर थोड़ा बॉटम प्लेस के आसपास है, उधर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक प्लेयर तो जीत के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन कोऑप से लेके स्टार्ट करके जो आखिरी गेम है उस पे जाके बॉटल गिर जा रहे हैं। तो इस जगह को फिक्स करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कोऑप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी BO3 के अंदर आपका जो सेकंड गेम है वो आपका काइंड ऑफ डिसाइडर होता है, या तो आप उसमें जीत जाते हो या फिर आप उसमें सर्वाइव करते हो, क्योंकि पहला मैच अगर आप हार जाते हो तो उसमें आपको जीतना ही होता है सर्वाइव करने के लिए, और जो आप पहले जीत जाते हो तो नेक्स्ट मैच आपको जीतना होता है कि आप ताकि एक तरफा जीत जाओ। तो सेकंड गेम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो कोऑप है। एंड आई थिंक
यस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोऑप पे आप जीतो, क्योंकि कोऑप पे अगर आप जीतते हो दैट मीन्स आपका सेम गेम के ऊपर दोनों का कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है, दोनों का कॉन्फिडेंस जो है वो इधर बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप कोई एक मैच जीत रहे हो तो दूसरे के ऊपर प्रेशर आता है कि यस वो जीता है तो अभी मुझे भी जीतना बाकी है, देन जाके मैच अप जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि कोऑप बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आज भी शायद इस मैचअप के ऊपर वो कोऑप ही एक डिफरेंस क्रिएटर हो सकता है। बट या आपने जैसे कहा कि इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स इधर हैदराबाद एफसी थोड़ा एज है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा ग्राफ रहा है अभी तक का इस पूरे ईआईएसएल सीजन 2 पे, ग्राफ केरला ब्लास्टर्स का थोड़ा डाउन से चालू हुआ था लेकिन अभी धीरे धीरे अप जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड हैदराबाद एफसी की अगर बात करें तो उनका ग्राफ बहुत अच्छे लेवल पे चालू हुआ था, बट आखिर के कुछ दिनों में हम लोग जिस तरीके से गेम्स दिखे हैं उसमें हम लोगों को थोड़ा सा डाइसी दिखा है, लाइक थोड़ा कभी डाउन जा रहे हैं कभी अप जा रहे हैं, तो बहुत बहुत अप डाउन चल रहे हैं। तो आज क्या वो अप का दिन होगा या फिर डाउन का दिन होगा, उसके ऊपर शायद डिपेंड करेगा कि स्टैट वाइज या फिर आज के दिन के वाइज कि कौन बेटर परफॉर्म करेगा और कौन आगे जाएगा। सो ये सब कुछ तो मैचअप के अंदर ही दिखेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक ऑडियंस भी वही सोचेंगे भाई लेके आओ, अभी देखना है, अभी देखना है ये मैचअप। जी, आप बंद करो बदमाशी, जल्दी मैच स्टार्ट करो. But yes, I think like you said, I kind of agree with you on one point that yes, co-ops are really important, but the individual first matchup, I think the utmost of the utmost important. It sort of sets the tone of what you're going to do in your co-op and how you're going to strategize things. Because if you lose your first game, then you have nothing, Yeah. right? You're under extreme pressure. Then you are bound to win your co-op so that you can force for the third. And that being said, folks, we are finally inside the game. The battle between those two brothers over here finally, breaking out, and it is Lokmanyu against Genocid, and they're not gonna cut loose on anything at all. And there you can see Lokmanyu already trying to build up chances, but Genocid figuring out he was going for that short pass, instantly intercepts. वाओ, फाइनली शुरू हो चुका है वो गेम जिसके लिए सबको था इंतजार। देखिए मुझे तो लगता है कि जल्दी गोल आना बहुत टफ है, बट ऑफसाइड ट्रैप पे फंसते हुए मेसी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे। इस गेम के अंदर मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा गोल्स होंगे या फिर कोई इंडिविजुअल बहुत सारे गोल्स मारेंगे। मुझे इवन फील आ रहा है कि थोड़ा इवन स्टेवन गेम जाएगा। देखिए कैप्टेविया लेफ्ट हैंड साइड से कोशिश, हाँ बॉल गया साइड लाइन के बाहर। एंड हैदराबाद एफसी केरला ब्लास्टर एफसी दोनों के ही तरफ से मुझे लगता है एक चीज़ कॉमन रहेगा, वो है इनका बिल्डअप। क्योंकि बिल्डअप हम देखें दोनों ही प्लेयर्स की अगर बात किया जाए, वो एकदम शुरू करते हैं डिफेंस से, लेकिन मिडफील्ड के ऊपर टाइम बिताते हैं और उसके बाद जाके वो अटैक पे जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आज मिडफील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा बॉल हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। Yeah, midfield is gonna get very heated up, but for now, Sid, he's trying to create a chance, a good cutback and a pass, and suddenly, there you have it, Hyderabad FC, they have taken a lead, and Lokmanyu has to take a step back and decide what is he gonna do next, because we thought it's gonna be really tight, but Genocid, he's playing no holds barred over here. He's in no mood for any jokes. He wants to get off the bat instantly, and so has he. And yet again, kickoff is there, and suddenly the ball possession is stolen away. So, like you said, I completely agree with you. The midfield battle is going to be really intense, but it also comes down to how much are you willing to frustrate Lokmanyu, because that is something that a lot of his opponents have done. Trying to just keep the possession on him, try to force out those tackles. But right now, I think it was an intended driven pass there, but was well blocked. This time, well read, because had that gone through, then things could have been worse for Lokmanyu. But right now, with Ronaldinho, gets that a little bit of a pace. But just before he goes on to pass, he still somehow managed to hold on to the ball with Mbappe. Again, a similar team. Now I changed it along with Ronaldinho. Beautiful pass to him. And that is exactly what does the job. And Lokmanyu, absolutely astounded over here. What's going on? Because, yeah, Genocid, he is dancing right now. And Lokmanyu is just left watching with his jaws wide open.
क्या शानदार शुरुआत रहा जेनेसिड की तरफ से। 2 गोल पहले 20 मिनट में दाग चुके हैं। आई थिंक आपने बहुत सही एक चीज किया कि लाइक कहा कि कोशिश इधर यही रहेगा जेनेसिड का कि वो बॉल बिल्कुल भी ना दे लोकोमेनो को, क्योंकि लोकोमेनो का जो गेम है वो यूजुअली बेस्ड ऑन पोजीशन रहता है, और कोई अगर प्लेयर पोजीशनिंग गेम खेलता है और उनको पोजीशन नहीं मिलता है तो उस जगह पे जाके उनका जो गेम स्टाइल है वो पूरा ही इधर टूटने लगता है। एंड आई थिंक वही जगह पे बार बार हिट किया जाता है लोकोमेनो को इस सीजन के अंदर एटलीस्ट। एंड वही चीज जेनेसिड की तरफ आप देख सकते हैं, बॉल पोजीशन काफी बेहतर तरीके से रखते हुए एंड बहुत जल्दी बॉल पोजीशन निकाल भी रहे हैं। बट लेफ्ट हैंड साइड से ऑलरेडी कैप्चर भी आते हैं, बट रोनाल्डिनियो के साथ हैट्रिक हो सकता है। गलत पास, ओह नो, शायद डायरेक्ट शॉट भी ले सकते थे रोनाल्डिनियो के साथ, एक गैप भी था छोटा सा, फिर भी मार सकते थे, बट एक एक्स्ट्रा पास की वजह से बॉल छीना गया। एंड अभी के लिए केरला ब्लास्टर के पास है बॉल। And somehow Lokmani needs to come back into this game. He cannot let this go one-sided. You know, that would be really hurtful to him. And yeah, Lokmani again, you know, that slow build-up. We have seen him do that time and again, but Genesis can read through him like an open book. He knows what he's about to do, how he's about to play, and he has to change it. And today we've seen, you know, Genesis has been quite attacking from the wings, right? Usually we see that variation, the plethora of attacks that come out of Genesis. They are on display, and all right. So what he wanted was a little bit of a curl over there. That did not happen, and out it goes for a goal kick. Yeah. पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ा लोकोमेनो को होल्ड अप करना चाहिए, तेजी से वो अटैक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल वो दे रहे हैं हैदराबाद एफसी को, तो बॉल पोजीशन मेंटेन करने की जरूरत है इस बार। काफी अच्छा बॉक्स के बाहर 1-2 करते हुए बेलिंगहम टुवर्ड रोनाल्डो, वैन डाइक सही टाइम पे एक चार्ज किया जिसके वजह से बॉल इधर बचा पाए, नहीं तो रोनाल्डो को जिस जगह पे बॉल मिला था वो फॉर श्योर फिनिश करते नेट्स पे। Oh, he certainly would have. Now this is something nice. You know, I like what Lokmani is doing, hunting for the ball, just trying to, you know, not give Genesis that possession. But Genesis, he can just hold back and right. He's already 2-0 up, and these are the starting phases of the game. And with Jairzinho goes for a step over, needs to pass it, and there he takes the shot, and there he gets the goal. Lokmani can't keep him away, can you? When his brother scored in two, he needed to get back in at a very crucial moment just before the halftime. He's managed to get a goal in, and now has made things even more exciting, more intensifying the situation there. I completely lost my mind. But yes, back we are with the game online, and for now, Genesis, he's got to try and figure out another way. So Lokmani is making his good old ways work, you know, just keeping possession. But right now, again, a lot of room for Mbappe, but Militao comes in for rescue at the right nick of time. And this is where Lokmani wanted to break free with a counter-attack. Could have been that last chance. But there you go. There you go. The halftime whistle gets blown. And end of the first half, we've seen some good goals. It is 2-1 favoring Hyderabad FC. Yes, and I think ये आखिरी गोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर आखिरी गोल नहीं होता तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है केरला ब्लास्टर एफसी के ऊपर। एंड अभी वो थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखा है, और ये गैप पे ज़रूर दोनों ही यही सोच रहे होंगे कि इस डिफरेंस को फ्रॉम लोकोमेनो पीओवी इसको कम कैसे किया जाए। ऑन द अदर हैंड हम लोग को जेनेसिस यही सोचते होंगे, देखेंगे कि एटलीस्ट और 2 गोल स्कोर करना ही है, नहीं तो ये सेफ पोजीशन, 1 गोल का डिफरेंस जो है वो उनको ज्यादा देर तक सेफ नहीं रख पाएगा। बट यस, शुरुआत जो हुआ था उधर से केरला ब्लास्टर्स काफी बेहतर तरीके से कम बैक किए हैं, क्योंकि पहले 20 मिनट 25 मिनट के बाद पोजीशनिंग था कुछ 59 एंड 41,
उसके बाद हाफ टाइम के बाद हम लोग 49-51 दिख रहा है। और ये पोजीशनिंग इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है लोकोमेनो के लिए स्पेशली, क्योंकि वो बार बार अटैक पे तो जा रहे थे और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पोजीशन पे बॉल वो लूज कर रहे थे जिधर से ही अचानक से एक अटैक बिल्ड हो रहा था हैदराबाद एफसी की तरफ से। एंड वो चीज जब से उन्होंने थोड़ा स्लो डाउन किया अपने गेम को, थोड़ा सा और अपने ही प्लेयर्स के बीच में अपने ही हाफ में पास खिलाना चालू किया, वो थोड़ा कम हुआ, एक्यूरेसी इंक्रीज हुआ पासिंग का, एंड उसके बाद से जो गेम है उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया केरला ब्लास्टर्स एफसी के। Yeah, I think when the game began, it was pretty much Genesis just stealing the ball away, retaining a lot of position. He was the one constantly just hitting Lokmanu with all that barrage there. And, this has been an underlying problem for Lokmanu always, his defense, right? Kind of gets a little off sometimes. Lately, we had seen Lokmanu, he had fixed that issue. He was getting a lot more tight. But today, few crevices over there, and Genesis managed to capitalize. And on we are off with the second half. Online at this point, Genesis trying to build up an attack. And Lokmanu, he's got to keep his centre backs very tight, but almost with Rude Hullet. We've seen this, we've seen this powerhouse of a card, right? Rude Hullet just steps over and suddenly he gets past through the defender. Don't ask me how, but yes, he does. So that is something that Genesis wanted to use in his favor. But right now, we've seen another thing that Lokmanu has been utilizing his left backs a lot. Even he's been playing those lob through passes. He's been trying to create chances from there. Again, a similar approach. This time, a beautiful cross. Almost could have connected to Ronaldinho, and we knew had it been the case, it would have been a goal. But again, ball possession lost. A nice driven pass, but no. Genesis intercepts, and a very crucial one at that. बहुत ज्यादा क्रूशियल था, क्योंकि अगर वो उधर बॉल स्टील नहीं करते तो शायद इक्वलाइज हो जाता अभी। बट या फाइनली लोगों को थोड़ा सा गेम जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा एक तरफा सा लग रहा था, लेकिन जब से गोल आया है लोकोमेनो की तरफ से तब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। हालांकि अभी तक इक्वलाइजर नहीं मिल पाया है लोकोमेनो को, बट यस चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि अभी आई थिंक दोनों को ही पता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अगर इसमें कोई भी प्लेयर उनके स्टैमिना की वजह से अपने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा। तो मोस्टली थोड़े बहुत टैक्टिकल चेंजेस एंड कुछ फ्रेश लेग्स दोनों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। At this point, I think it's going to be primarily around the formations, because I think the fresh legs usually come around that 70 to 80-minute marker, where we see, some Erling Haaland come in, maybe Pele, and a few players have even that love utilizing their fullbacks. I think get Alphonso Davis also. And understandable, you get that blistering pace with him. And, for poor people like us, I think it's usually Diaby that comes in the right midfielder, right? So one of those cards. I hope people completed that SPC, but regardless, we move on. I think most of us, most of these players don't really care about that because the kind of teams they have, they don't look at, they look down on those cards. Like, hey, we've got team of the year, we don't care about it. But yes, finally, like as suggested, Pele's come on. Even Theo Hernandez has come in. I think it's instead of Cap De Villa. So you also get a little bit of an added pace with Theo Hernandez. And right now, it's going to be really interesting to see what can Lokmanu make out of this chance right now. Just again, those constant chain of passes routine. It does want to find an opening. And can do so. Had he just turned away with R9, this could have been a chance. He could have directly taken a shot. Yes, मैं भी वही सोच रहा था, बट नहीं, वो टर्न नहीं कर पाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट यस चांस जो है वो काफी बेहतर तरीके से बना रहे हैं। एंड काइंड ऑफ अगर देखा जाए आफ्टर 39th मिनट बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहे हैं लोकोमेनो, एंड तब से बॉल कंट्रोल बात किया जाए या फिर इंटेंसिटी या फिर डोमिनेशन पिच के ऊपर बॉल छीनना, वो सब कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से। लेकिन जो वो एडेड पेस लेके आए हैं ये भी ज़रूरत था, क्योंकि जेनेसिस को बीट करना उतना इजी नहीं है।
राइट हैंड साइड से एम्बापे, हैदराबाद एफसी। जेनेसिड ऑलरेडी एक गोल से आगे है, लेकिन उनको पता है कि ये जो डिफरेंस ये कभी भी घट सकता है। इसी वजह से एक और गोल जरूर चाहिए होगा। बन चुका है डेंजर सिचुएशन, बट फिर से एक बार वर्जिल वैन डाइक अपने बॉडी से शील्ड किए, जिसकी वजह से खतरा फिलहाल के लिए तो टल गया। I think Lukman, used an R2 on Virgil van Dijk. For a moment, you could see him just running around. And, that's the point where, I have conceded a lot of goals. So I cannot get a little impatient and just run around and then, I give my opponent a lot of room and they score. But now Lokmanu's gone a little long. This time, again, exploiting that left back Theo Hernandez over here with Mbappe. Has to perform a skill move, but not in the right direction. I think wanted to go for that reverse elastico and then shoot. Or maybe he could have opted for a heel to heel. He was in the right angle and then he could have just shot towards the far post. But things did not go as it was planned. And I'm kind of really surprised that Genesid hasn't queued a pause. And it's another pause from Lokmanu's side. So now I think he's going to go ultra attacking, full all out, 3-4-2-1 or something like that. And we might see some changes coming in from Genesid over here. And I like Genesid because he plays Ginola. Ginola is one of my favorite cards. And yes, ladies and gentlemen, that matchup against Bengaluru FC, where Hyderabad FC stays their comeback. The first goal came from David Ginola, and it was a beautiful one. Perfect heel to heel, and just went Yes. on and scored. And that clutch moment, he's one of those cards that can do that. I mean, listen, I never had an opportunity to play with those Team of the Year cards. Few on those loans. Lately, when I got a loan Ginola on my PS5 account, I played few games. Bro, I'm not gonna even be kidding you when I say this guy can really shoot from anywhere for me. At least for me, in the division that I play, he was scoring goals from outside the box, inside the box. Maybe that little agility was missing for me, but still used to get the job done. And my opponents in foot champs, who had way better cards than me, they were just left stranded. यस, बट लोकोमेनु की तरफ से आप देख सकते हैं कि उनके पांचों के पांचों सब्स्टिट्यूट को यूज कर दिया जा चुका है। बहुत कम दिखता है हालांकि ये 5 सब्स्टिट्यूट लेके आ रहे हैं प्लेयर्स, बट इस बार केविन डे ब्रुयना को इंट्रोड्यूस किया गया है। एडे मिलिटाओ हम जानते हैं ऑन द बॉल काफ़ी बेहतरीन एक डिफेंडर है, लेकिन उनके साथ आप बॉल ड्राइव भी कर सकते हो। कभी कभार तो वो गोल भी मार देते हैं, मेरे लिए तो मारे थे, वो भी गोल्ड कार्ड। बट इस बार एम्बापे बहुत शानदार टुवर्ड्स रोनाल्डो, लेकिन वर्जिल वैन डाइक हाँ फिर से एक बार ये मॉन्स्टर है, डिफेंडर नहीं, बट बहुत ही जल्दी काउंटर पे विथ हलैंड पहले ऑलरेडी रन निकाल चुके हैं, बीचों बीच आ चुके हैं, बट क्या वो पास खिला पाएंगे? देखिए टाइम प्रॉपर लिए ताकि प्लेयर्स इधर इंक्रीज हो सके अटैक पे। बट यस, जेनेसिड अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, एंड वो चाह रहे हैं कि नहीं अभी अटैक नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम व्यतीत करते हैं, और जो लास्ट अटैक है वो हमारे तरफ से ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लीड पे है। एक बेहतरीन थ्रू पास, हलैंड फिर से शायद बैक पास होगा मोस्टली, जैसे जिस सिचुएशन में फंस चुके हैं। बट नहीं, बॉल नहीं देने वाले वो। What he's doing is so tough, but Genesid, he's gonna take it with open arms, right? There you go, 3-4-2-1. He's gone all out, and all that Genesid needs to do is buy some time. Is just buy some time, and he was doing exactly that. He's like, I'm not gonna give the ball away, and you want it, you take it. It goes out for a corner. I'm still gonna do the same routine. I'm just gonna kill two more minutes, and I'm gonna take that W. And this is where Lokmanu must be kicking himself in the feet for letting that second goal also go in. That it happened in such quick succession. I felt like Lokmanu hadn't even settled inside the game, and suddenly Hyderabad FC hit him twice. And then we saw Lokmanu get back into his senses. There you could see even Nkuku coming up. He's gone literally all out. But now, what Hyderabad FC have done is a few more defensive approach, getting Vieira in. So you're gonna be defensively a little bit stable there. And now he's just gonna annoy Lokmanu out of the world. Oh God, Lokmanu. So No way. ये
इस पे हम लोग क्या ही एक ही बोले. चीज़ कह सकते हैं क्या ही बोले, और एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि स्प्रिंट बहुत अच्छा लगाते हैं जेनेसिस. तो यस, फाइनली पहला मैचअप हुआ खत्म, और वो जो पहले हाफ के शुरुआती 20 मिनट में 2 गोल किया गया था, वो ही इस गेम के डिफरेंस जो है वो क्रिएटर बना. उसके बाद से हम लोग दिखा है केरला स्टार एफसी लोकेमेंडो की तरफ से उनका ओवरऑल गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है. बहुत बहुत ज़्यादा बॉल पोजीशनिंग देखिए, फिर अटैक देखिए, Saves. जो क्रूशियल अटैक कर रहे थे. यस, यही जगह पे. और शुरुआती में शायद लोकेमेंडो समझ नहीं पाए थे कि इतना जल्दी जल्दी उनके ऊपर शायद अटैक आ जाएगा. You know, in that previous goal, you could have seen he had his marker on Virgil van Dijk, who made that extra run, and that was, I think, he had him on his R2. He kind of pushed in over there and gave so much space for Genesis to shoot. So, you know, those are those little mistakes, and you kind of get hounded on that, and that is exactly what happened. But then we saw, you know, Lokman this beautiful cutback into a goal. And ever since from this point onwards, and I think 10 minutes even before that, Lokman had started, you know, getting a little bit of more composure into his game. He was not letting Genesis do whatever he wanted, because Genesis primarily the first 30 minutes of the game, he was dominating. But then Lokman comes back in, he was playing pretty tight, but you know, Genesis is a very smart player. He's a very cunning guy. He knows that you know, that one goal advantage is gonna amount to nothing. And second game, we could see Lokman being very desperate, trying to, you know, always take those balls away. He was making those nice steals over there. He was he was cutting off Genesis passes, be it a you know, driven pass, be it anything at all. We saw him kind of get a little bit more attacking from that. He was Lokman was exploiting that left wing a lot, and Lokman was getting a little close. Like every single time he was getting inside the box, but then we saw those you know, lack of composure there, maybe because this is the point where it's sort of you need to decide where you go with it, right? Do you go for an extra pass, do you go for an extra skill move, or do you take a shot? But every single time Lokman did that, Genesis, his defense was really on point. And this was more than a you know, game which came down to who scored more goals. It came down to the fact that whose defense was better, and Genesis proved that. And as a result, you know, in those dying phases when Lokman made those formation changes and went out all out, Genesis, all he had to do was hog on the ball. And finally, for the first time, we could see a player doing that. And you know, when it's victory on the line, and especially when you consider Hyderabad FCTT to be one of those top 4 teams, and they're somehow kind of in the middle order around that 6th position, this is where Genesis had to, by hook or by crook, win this game, and that he did. यस, एंड आखिरी मोमेंट पे शायद जेनेसिस को पता चल गया था कि यस, इस बार जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है. और आखिरी मोमेंट पे वो नहीं चाह रहे थे कि वो गेम को लूज़ करे. तो या जो उन्होंने किया वो काफ़ी अच्छा था, एंड प्रॉपरली बॉल कंट्रोल रखे. बट जो नेक्स्ट मैचअप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होगा क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट गेम पे एक का रिजल्ट आया है जिस पे ऑलरेडी हैदराबाद एफसी जीत चुके हैं. सो जो नेक्स्ट गेम है वो प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा केरला ब्लास्टर एफसी के ऊपर, क्योंकि केरला ब्लास्टर एफसी की अगर बात किया जाए उनकी तरफ से कोऑप के अंदर एटलीस्ट वैसे कोई वाव मोमेंट या फिर कोई वो मैजिकल मोमेंट जो है वो अभी तक नहीं आया है, जो कि हैदराबाद एफसी की तरफ से दिख चुका है. तो हैदराबाद एफसी के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही चलता होगा कि यस, हम लोग जब ये कर सकते हैं तो हम लोग इधर क्यों नहीं जीत सकते. तो वो एक अलग फैक्टर हो जाता है. तो मुझे लगता है कि उस जगह पे थोड़ा हल्का एज रह सकता है हैदराबाद एफसी के पास. बट लेट्स सी कि शुभम आने के बाद क्या लोकेमेनु के साथ बात क्या चलता है, क्योंकि जो नेक्स्ट हाफ है उस पर तो लोकेमेनु का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत बेहतरीन दिखा था. Yeah, see, this is the thing, right? This is when you're completely getting into a new dimension when you enter into co-op game, because everything sort of changes, right? You have to be on the same page with your teammate. And for Kerala Blasters FC, their co-op game hasn't been their stronger suit, right? It's been always the individual players. But with Hyderabad FC, it's the other way around. I mean, if they could pull off a comeback in the final 10 minutes, that to score 3 goals against Bengaluru FC, they can literally do anything. So Kerala Blasters FC would be quite faced with the fact, maybe a little bit more intimidated, that even a 3-goal lead will not be enough. But then again, you know, they have to get there first.
They have to score 3 goals, and I feel personally like what we've seen in the past, even in the stats, Hyderabad FC have been a better co-op team, and especially even after after Genesis winning his game, it sort of eases up that pressure that they come into playing co-op, right? They can just chill around. Even let's say the world comes falling down for them, somehow they lose, right? Then again you have Watsy, and Watsy has been delivering lately, especially the matchup against Shagnik. That was absolutely brutal. That was ludicrous, and the way he defeated Shagnik, that is something he himself considers as the best comeback of his life lately. So Varsi is a player that can do that, but again Shubham, it's going to be difficult. But for Shubham, that extra added pressure there, TT. And now if the co-op matchup was already not there, right? Let's say if Kerala Blasters FC just lose the co-op game, then it's done and dusted. The pressure will just go off, and Yeah. with the same pressure going off, even their hopes of making it to the playoffs, that also goes away. So that Yeah. is where you have that extra little bit of pressure, because Kerala Blasters FC, they're struggling at the bottom of the table at the 10th position, and they just Yes. barely have 4 points. It's not like Hyderabad FC are having a good walk, but they still are ahead 6 points. And but if they win this one, they're gonna get to 9 points and get on top of Chennai FC. So that's there for them. But for Kerala Blasters FC, this is definitely a must-win game. They cannot afford to lose a single match from over here, because if they lose, then making it to the playoffs, it's not gonna be happening for them. यस एंड आई थिंक अभी भी जो पॉइंट्स टेबल है वो पूरा खुला हुआ है. टॉप 6 के अंदर अभी भी बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बात इधर वही आ जाता है, क्या वो उतना तैयार है मेंटली एंड गेम के अंदर भी एटलीस्ट ऑब्वियसली गेम के अंदर भी तैयार रहना होगा उस लेवल पे. क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि सबका सेम लेवल के स्किल सेट है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा जो जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा स्किल लेवल है उनको थोड़ा कम बोल दिया जाएगा. क्योंकि हम लोग इस गेम के अंदर, इस पूरे सीजन के अंदर देखें, कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जिनका स्किल लेवल, चाहे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनका जो दिमाग, उनके जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है वो इतना जल्दी जल्दी फास्ट काम करते हैं. हालांकि मैं अंदर जाके देखा नहीं था या फिर कोई टेस्ट नहीं किया था, बट फिर भी जो We can उनका feel that. डिसीजन मेकिंग है, या वी कैन फील दैट, एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है. तो उस जगह पे उनको हराना बहुत टफ हो जाता है. हालांकि पॉइंट टेबल के हिसाब से पॉसिबल तो बहुत कुछ है कि इसके बाद अगर 3 मैचेस जीत जाते हैं बैक टू बैक, जो बाकी के गेम है, और अगर 3 मैचेस जीत जाते हैं 3x3 मतलब 9 पॉइंट्स आ सकते हैं, जिसपे वो क्वालिफाई हो सकते हैं. लेकिन इधर सब कुछ आ जाता है, क्या वो रेडी है उतने पॉइंट्स निकालने के लिए अचानक से, वो चीज़. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यस, बहुत टफ होने वाला है. और ये कोऑप गेम देखते हैं. लाइक मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हैदराबाद एफसी की तरफ से कुछ गलती ना हो जाए बस. अगर वो गलतियां नहीं करेंगे तो वो जीतने वाले. लेकिन वो होता है ना कि कभी कभार गलतियां हो जाता है, और अगर वो होता है तो उस पर कैपिटलाइजेशन जो है वो शुभम एंड लोकमनु जरूर निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस गेम के अंदर उनको निकालना ही होगा. और अभी तो मुझे लगता है कि वो फुल्ली रेडी है कि जो करना है इसी में करना है, नहीं तो फिर बाद में तो बहुत लेट ही हो जाएगा. फिर लेनी देनी हो जाएगी. So and but to be honest, at this point, like we've discussed, right, it's a must-win game for Kerala Blasters FC. But if Hyderabad FC sort of drops this out, then that little bit of that thin cushion that they have, that layering will be peeled off, and then it's going to be a must-win game in the remainder of the matches that they have, right? And Kerala Blasters FC, we can say that their journey might just be over from here onwards, because Kerala Blasters FC, if they win this, then they're gonna push themselves up towards that middle order from the lower order. So the importance of this match for KBFC is much more than Hyderabad FC. But Hyderabad FC, I don't see them dropping a game from over here, right? Especially what has been their underlying problem, right? Lately, the way the campaign started off, and I kind of felt, the way Genesis played against, Naveen, we kind of had already commented that, yes, this player is here to win, and he's going to stop at nothing at all. But come the next few games, and we see Genesis having a few lousy ones, a few mistakes that he does not intend to make, few fickleness being visible here and there, and he used to kind of drop games. They used to end in a draw, and things weren't looking sunny for Hyderabad FC. But then Varsi stepped down for this game, and then there were even days when both the players sort of collapsed. So
they've had that mixed run so far in the eISL, as a result of which they're kind of in that middle order right now. You know, no, they've just barely managed to get one win, and then they've got a lot of draws where Varsi has to come in clutch, and they've lost 2 games. But that being said, folks, we are finally entering inside the matchup, and we could have a quick glance at the formation. So Hyderabad FC, they're going for a little bit more attacking here. They've gone, I think, for a 4-2-4, and I Hmm. really want to see how Genocide and Varsi, cope up with each other, because Varsi has been a player we have talked about a lot less, because there could be books written over what he's done in the past. So I want to get upon Varsi later when his individual matchup begins. But here we are with the kickoff, folks. It is Kerala Blasters FC from left to right and Hyderabad FC from right to left. यस एंड दोनों ही तरफ से अभी के लिए तो डिस्कशंस हो चुके होंगे, जो स्ट्रैटेजीज बनाए होंगे ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे गेम के अंदर, बट क्या वो काम आएगा कि नहीं वो तो अब लोगों को थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे गोल कंसीड तो नहीं करना है, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने देखा जिस तरीके से गोल कंसीड हुए थे, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। बट लेट्स सी इसके बाद कौन से तरफ आता है। रोनाल्डो टुवर्ड्स सार्जिनियो एंड ओवरऑल आप देख सकते हैं थ्रू बॉल्स तो अभी हम लोग को देगा, बट क्या शुभम इधर फिनिश कर पाएंगे कि नहीं वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेलिंगम टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, एंड देखिए इस गेम के अंदर एटलीस्ट एक चीज तो पता चल रहा है कि केरला ब्लास्टर्स अपने पास ही बॉल रखना चाह रहे हैं और अपना जो कंपोजर है वो मेंटेन करना चाह रहे हैं आखिर तक। I think for Kerala Blasters FC, it's going to be so pivotal, right? That they do that, and they constantly just try and harass. And one of those areas where they can really exploit is that midfield, right? Unless and until I think Genocide and Varsi get their 2 wings a little back and make plays accordingly. But here we have again a pass on towards Mbappe. A bit of a ball roll scoop over there, looking for that cutback, perfectly delivered. And Kerala Blasters FC, they score the opener. This is exactly the kind of a partnership we would want to see from Lokmanyu and Shubham at this point of the game. We need goals like this to make it, one each, and then come down to the decider. Because Shubham, he is a player who likes to thrive under pressure, and so is Varsi. We have seen these two players clutch it out for their clubs repeatedly. And at the back of the mind, everybody would be wanting Kerala Blasters FC to win this game, because then we would have a thriller on our hands. Wow. Ronaldo towards Mbappe, but इधर एडम मिलिटाओ के साथ बहुत शानदार डिफेंस। और देखिए एक चीज तो पता चल रहा है कि इस बार हैदराबाद एफसी का उतना खास सिनेरियो नहीं चल रहा है, स्पेशली उनके मिस पासेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। और ये शुरुआती गोल के बाद केरला ब्लास्टर एफसी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, एंड उनको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से हिट करना है, क्योंकि बॉल छीन रहे हैं बार बार और बॉल कंट्रोल अपने पास रखने से प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। बीचों बीच एक का क्रॉस जरूर रखा गया, लेकिन रिसीव कोई भी नहीं कर पाए। Pretty heated up over here. I mean, at this point, right now, Hyderabad FC, they have to figure out a way to come back in. They would want to let the sun set on the horizons for Kerala Blasters FC. A beautiful shot. That was a nice elastico there. But look at their misery. Hits the crossbar. But again, it was an offside also. But that shot, that was a killer one. But could not deliver the killer blow. Could not let them get back into the game. And Kerala Blasters FC need to recover from this. They need to, understand that yes, we cannot let our guards loose, because if we do that,
then we're gonna get punished. Oh, oh, and it's so difficult. You know, it's those milliseconds, not even the seconds that you get to react. Because if R9 could have just ball rolled a little bit there, then that could have been another goal and would have been one of the goals for the evening to remember for a long, long time. But Kerala Blasters FC, I think TT, we can both agree that they've been looking really good in their co-op game, at least in the first 30 minutes of the game. Yes, बहुत बहुत शानदार रहे हैं अभी तक. एंड मुझे लगता है कि हाफ टाइम जब तक नहीं होगा तब तक हैदराबाद एफसी के लिए वो डिस्कशन या फिर इधर से कम बैक करना बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लाइक जो फॉर्मेशन उनका हो रहा है यूजुअली वो या तो सेंट्रली जा रहे हैं, बट इनका जो ट्रांजिशन है विंग एंड विंग से फिर से सेंटर, उस पर थोड़ा टाइम जा रहा है और थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी हो जा रहे हैं. और आई थिंक इसी वजह से केरला ब्लास्टर्स एफसी अभी तक अपने डिफेंस पे इतना ज़्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म किए हैं. एक बार देखिए डिफेंस का स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहे. कभी कभार एक सिंगल प्लेयर के ऊपर होता है तो वो एक्स्ट्रा रन्स निकाल जाते हैं या फिर थोड़ा राइट लेफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार देखिए क्या ही शानदार दिखता हुआ ये कॉम्बिनेशन, जिसका प्रॉपर फायदा केरला ब्लास्टर्स एफसी को मिलता हुआ सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, मिडफील्ड के ऊपर भी. जब वो बॉल कंट्रोल कर रही है, फिर पासिंग बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल दिख रहा है एंड बहुत बेहतरीन तरीके से इधर ऑपरेट करते हुए आखिरी कुछ मिनट फर्स्ट हाफ खत्म होने के, और शायद मुझे लग रहा है एटलीस्ट एक अटैक के साथ तो खत्म करना चाहेंगे केरला ब्लास्टर्स एफसी. I mean, they would of course want to do that, and think they are keeping the ball so that they get that final attack. And with the way things are looking, Kerala Blasters FC, their defense has been really tight. But with the kind of a formation that Genesis and Warsi have opted for, ideally you would want to capitalize your wings a lot. And maybe I think both Shubham and Lukman, you have figured that one out. And as a result of which, Kerala Blasters FC have kept quite a lot of possession. They've also managed to score a beautiful goal. They've made more passes over here. And that's the synergy that you would need for Kerala Blasters FC, for all the fans out there, for this club to right now. Because defeat from over here, it's pretty much gonna just end it all, right? You kind of have your morale shattered, and then all the games that you have would just be for consolation. It gets so difficult because the way things are starting up at the bottom half of the table, right? We are seeing few clubs making a comeback, few clubs kind of still getting piled on by the other big ones. But right now, as things are, Hyderabad FC, they need to have that pep talk. But again, no matter how you cast or how you criticize how Hyderabad FC have been playing, what they pulled off against Bengaluru FC was nothing short of a miracle, right? And they always, have that ability to do so. They've done it once, well, they can do it twice. And against a club like Kerala Blasters FC, why not? So I think those dying phases of the matches, Kerala Blasters FC have to be really having their guards up, because this could also be one of those chances. Beautiful room created, little bit of a heel to heel over there with R9, created some space, wanted to take that shot, but sadly could not go in. एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो सही से हिट नहीं हो पाया. बट यस, शुभम तमतम एंड लोकमेनु 06 स्पेशली पिछले गेम के आफ्टर 30th मिनट से लेके अभी तक अगर देखा जाए, केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से हम लोगों को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है. और वो चीज़ प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है इधर हैदराबाद एफसी के ऊपर. एंड ये विन ज़रूरत भी था. केरला ब्लास्टर को अगर 3 पॉइंट्स निकालना था तो ज़रूरत है कि इधर से वो जीत के जाए. हालांकि अभी के लिए तो लीड पे है, लेकिन कब तक वो देखना होगा. हैदराबाद एफसी स्पेशली वो अपने विंग को भी इधर इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत ही क्रूशियल जगह पे कैप्टेविया के साथ बॉल जीता गया. एंड ये चीज हम लोग को बार बार होता हुआ दिख रहा है.
All right, so this is the first time I'm watching Kerala Blasters FC doing something like that, and I'm kind of worried they might be punished for it. And no, that's not going to be the case, but a good tackle there. But still, Hyderabad FC come through with the ball, and just when they got advantage there, and the advantage just lifted off, and suddenly Kerala Blasters FC just take the possession. Oh, no, these are the passes that they should tend to avoid. Could have gone for an extra ball roll. Nice driven pass to Mbappe over here. Let's see what can he do out of this one. Reverse Elastico coming into play with R9. Goes for a heel to heel and takes a shot. Beautiful one. Hyderabad FC come right back into the game. What a goal that was, TT. Yes, what a बेहतरीन गोल. एंड इस गोल के बाद इक्वलाइज हो चुका है और इस बार दोनों ही तरफ से जंग ऐलान होने वाला है. आखिरी 30 मिनट मुझे तो लगता है कि गेम इधर बहुत ज्यादा फिजिकल हो जाएगा. एंड जो है थोड़ा बहुत टैकल्स भी हम लोगों को दिख सकता है, रफ टैकल्स, बट या वो तो हम लोगों को दिखेगा ही. बट अभी के लिए चेंजेस का टाइम आ चुका है जब फ्रेश लेग्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. पिछले गेम में तो 5 प्लेयर्स को इधर सब किया गया था केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से. आज इस मैचअप के ऊपर क्या होगा क्या नहीं, लगी इस गेम के ऊपर क्या चेंजेस लेके आएंगे वो देखना होगा. तो 3 कम से कम हम लोग को दिखाए क्योंकि वो पिच से बाहर जा रहे थे. बाकी लेट्स सी कि कौन कौन से नाम को जोड़ा गया. थियो हर्नांडेज मोस्ट प्रोबेबली आएंगे. एंड यस, इधर मेसी को लेके आया गया है. सार्सिनियो के जगह पे मोस्टली नहीं, पेले के जगह पे मेसी आया. एंड हर्नांडेज आया इधर कैप्डेविया के जगह पे. तो 4 सब्स्टिट्यूट हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं फिलहाल के लिए. Both these clubs at this point would intend to go all out over here. I mean, Kerala Blasters FC for sure cannot just settle with a draw. Cannot fight for only 1 point. They need all the 3. And this time, good chain of passes with Mbappe. Have a nice shot, but have intended to go for another pass on towards R9. And KBFC are staging a comeback over here. At the 65-minute marker, they've managed to find one more. And there you can see, that resilience coming into play over there. And it's working out. That extra pass sort of made all that difference over there. That's just when we were thinking that he might take a shot with Mbappe, decided to give that to R9. And it was a free shot on goal. And R9, he does not miss from there. And Kerala Blasters FC, everything now just working out for them. At this point, what is Hyderabad FC going to do? That's the big question over here. Look at that build-up, right? With Pele finding a little bit of room. There you can see, Ruud Gullit went a little ahead. Now that's the room. That's the room that they needed. And that's where I think Eder Militao messed up. That is where, that is the kind of a margin that Kerala Blasters FC needed to score. And Hyderabad FC, they might have to get back to the drawing board. And this is where I guess we get to see them make a few substitutes of their own and change the style of play. I think we're going to see constant pressure, PAPL, both of it getting applied. And now, TT, this is where I would like your thought on this. Do you think Kerala Blasters FC would go a lot more defensive right now, or do you think they would just keep pressing with the attack and try to find a few more goals? आई थिंक मुझे इधर लगता है कि बैक टू बैक प्रेसिंग करना ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. तो या जब ज़रूरत होगा तो प्रेसिंग, बट यूजुअली बॉल कंट्रोल ज़्यादा मैटर करना चाहिए. एंड बॉल अगर कंट्रोल में रहेगा तो बीच बीच में मौका भी मिलेगा जिसपे वो इस डिफरेंस को जो है वो और इंक्रीज कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो लगता है पॉइंट या फिर जो चेक बॉक्स है उसको चेक करना होगा वो है पोजीशनिंग. और वो पोजीशनिंग ये नहीं होना चाहिए कि अपने ही हाफ पे हो. वो पोजीशनिंग इधर हैदराबाद एफसी के हाफ पे रखना ज़रूरी है केरला ब्लास्टर के लिए. एंड सेम विथ मुझे लगता है कि हैदराबाद एफसी के लिए भी, क्योंकि हैदराबाद एफसी अगर बॉल को केरला ब्लास्टर के हाफ पे रख के 2-4 पासेस खिला सकते हैं तो मुझे लगता है कि बीच में से गैप दिखेंगे. और ये गोल के बाद एंड अभी जिस तरीके से मैचेस गए, हालांकि 4 न्यू प्लेयर्स को ऑलरेडी लेके आ चुके हैं पिच के ऊपर, उनको छोड़ के भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि जो स्टैमिना है वो सबका ज़्यादा नहीं है और सेंटर बैक्स इधर चेंज नहीं हो रहे. एंड वी नो
एडम मिलिटाओ एंड वर्जिल वैन डाइक, वो चाहे ये दोनों अगर नहीं भी होते, कोई भी सेंटर बैक्स हो, उनको अगर ज्यादा रन नहीं निकालना पड़ता तो उनका जो स्टेमिना है वो काइंड ऑफ बहुत अच्छा खासा रहता है। तो स्टेमिना का देखना होगा, लाइक क्या उतना खेल रहेगा कि नहीं, बट मुझे लगता है कि पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इधर, एंड वही चीज जो है वो इधर आगे लेके जाएगा। बट हैदराबाद एफसी के लिए पोजीशनिंग के ऊपर खेलना मुझे लगता है कि थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उनको बहुत जल्दी गोल चाहिए, एंड उसकी वजह से उस पर गोल भी हो सकता है, उनकी तरफ से गलती भी हो सकता है। But this is a really good build-up going on from Hyderabad FC, and it's a game of taking pauses, but cannot afford to lose ball like that. Thankfully, oh Messi, that's not where you're supposed to go. But either ways, you know, they need to just calm down on their nerves, because Hyderabad FC folks, they've done it in the past, certainly have the potential, and this time even the margin is not that huge. It's just one goal that separates them from KBFC right now. But Kerala Blasters FC, we have seen them choke against East Bengal FC in their co-op game after having such a nice game, you know, having a 2-goal lead up. They kind of flustered up. But this time they're looking much more controlled, much better. Look at that dribbling coming in from Pele over there. And they have all the time in the world just to, you know, try and keep the chain of passes going, that routine carrying forward, maintain that control over that midfield, and, you know, just try to force out. You know, because once you go on constant pressure, you would see Oh. the players aggressing a little bit. And now KBFC, they get to make their plays happen. So they kind of opted for a different formation here, from 4-3-2-1 to 4-2-2-2, and they went ultra attacking. So I think attack seems to be their best form of defense at this point, because from over here, what I feel, they'll go 5-4-1, or a little bit more defensive there, go all defensive, or maybe they could just go all out. I think it's nothing in the middle. They're gonna play some extreme FIFA over here. Yeah. एंड आई थिंक उसी जगह पे इधर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मिडफील्ड प्लेस काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं वो देखने के लिए मिलेगा अभी के लिए तो केरला ब्लास्टर की तरफ से, क्योंकि विंग पे अगर बॉल लूज करते हैं फिर उधर से कोई भी मोमेंट पे वो अटैक आ सकता है या फिर आने के चांसेस बन जाता है, तो कोशिश वही होगा। बट अभी के लिए फ्री किक मिला है केरला ब्लास्टर एफसी को, एंड उनके लिए तो अभी के लिए बहुत एक शानदार चांस है कि वो बॉल रख के टाइम भी व्यतीत करे। लेकिन देखिए बॉल लेके आउट ऑफ कंट्रोल चले गए और साइड लाइन के बाहर जाते ही एक थ्रो इन मिलेगा केविन डे ब्रुयना। बट नहीं, ये मिस पासेस आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता हुआ दिखा है, और इसी बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे इसके पहले जब प्री मैच टॉक्स चल रहा था कि आज अगर हैदराबाद एफसी गलती करते हैं तो उस पर कैपिटलाइजेशन दिखेगा, और वो दिखा भी है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से। No, Hyderabad FC cannot afford to do this anymore. They need to figure out a way where they force an attack and score an equalizer if they want to at least make sure they get that 1 point in. But no, at this point Kerala Blasters FC also cannot manage to play these risky passes, right? At this point they need to hold on to the possession, and now suddenly you can see Hyderabad FC had almost broken out for an attack, but well fended off. Look at that vision. Found that Messi was, unguarded. Not a lot of players usually see that. At least I don't see that. I just play my random game. It's just about interception or just play that short pass. But they know that they cannot, afford to keep the ball a lot on their half, because they'll be susceptible, or rather prone, to the ball being stolen away from them. A good run with Pele towards Hakimi. Wanted to pass towards Ginola, but Ruud Gullit manages to get it away from danger. And now with R9, they're triggering the run. At a point, he was bound to get a little tired, and they could see the pace even slowing down. Hence, opted to pass the ball over. But Hakimi does not want to pace himself down, at least even for a bit. And getting through the defense there with Hakimi. Where does he go for the next pass? Barely just 2 minutes remaining into the game. And this is the moment where Kerala Blasters FC have been the most vulnerable, right? If they lose the ball from over here, then Hyderabad FC, they're just going to launch an all-out attack. So they're going to play a short pass. At this point, Lokmanu has a chance to take his revenge. Do what Genesis did against him, hog over the ball.
But right now, Hyderabad FC, what they've done is lost possession. But somehow, Kerala Blasters FC have managed to retrieve it. And Hyderabad FC, oh my goodness, they have to defend and steal the ball away. You could see that desperation creeping in, but I think Kerala Blasters FC have done it. You could see the intensity, the anxiety from Shubham's side. Who does he pass to? And just swats the ball away from the play, and there you go. The final whistle gets blown, and Kerala Blasters FC have done it, folks. They have managed to level up the series, one each apiece, and now it is another rivalry, folks. It is another rivalry. It is going to be Shubham and Varsi that play for the decider. Both these players are not going to back off at all. At least for Shubham, we know he's so far been that reliable player from Kerala Blasters FC, and we also know they exactly want him to be playing in such a moment. Last season, even during the season 1 campaign, he used to always play under circumstances like this, and somehow managed to get those W's, and if not that, a draw. But what a game it was from Kerala Blasters FC. No complaints, right? Anything and everything that was going wrong, they worked on it, and especially the defense was so good this time. क्या क्या शानदार गेम गया केरल ब्लास्टर एफसी के लिए, एंड स्पेशली ये बात तो मानना ही होगा कि आज के दिन पे केरला ब्लास्टर एफसी, अगर हम लोग दोनों गेम्स को मिला देते हैं, सो ज़्यादातर टाइम हम लोग को उन्हीं की तरफ से दिखा है कि वो डोमिनेट करते हुए। हो सकता है कि रिजल्ट अभी 1-1 चल रहा हो, दोनों एक एक करके मैचेस जीते हैं, बट जेनेसिड आई थिंक उनको भी बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ पता होगा कि पहले 30 मिनट के बाद जाके आउट ऑफ कंट्रोल गया था गेम उनके। यस, बाद में जाके जब आखिरी के मोमेंट पे उनको पता चला या फिर उनको समझ में आ रहा था कि यस बैक टू बैक उनके ऊपर अटैक आ रहा है, तो वो थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच ले लिए। यूजुअली जेनेसिड की तरफ से ये दिखता नहीं है कि वो डिफेंसिव अप्रोच ले रहे हो, वो जाते हैं डायरेक्ट लाइक गोल मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बट आज कहानी कुछ अलग था, एंड आज मुझे लगता है कि प्रॉपरली रेडी होके आए हैं और प्रॉपर स्टडी करके आए हैं कि हैदराबाद एफसी के लिए क्या क्या चीज़ सही रहे। और हैदराबाद एफसी का हाल ही के कुछ दिनों में जो परफॉर्मेंस डिप आया है, शायद वो भी एक कारण हो सकता है आज के इस को-ऑप गेम पे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहने के पीछे। क्योंकि देखिए, गोल तो आया, वो होता है ना कि आप 90 मिनट्स में से अगर आप सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट आप सही से खेल रहे हो, सही से खेलना मीन्स आपके हिसाब से चल रहा है गेम, तो वो गेम आपके लिए हम लोग नहीं कह सकते कि 50-50 था। क्योंकि शुरुआती से लेके बहुत सारे मिस पासेस देखने के लिए मिले, बहुत जगहों पे बॉल लूज करते हुए दिखे, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल प्लेयर बहुत देर तक बॉल ड्राइव करते हुए दिखे, जिसकी वजह से क्या हुआ, केरला ब्लास्टर्स के पास बॉल गया और वो बहुत जल्दी हो रहा था, बहुत जल्दी केरला ब्लास्टर्स बॉल छीन रहे थे, जीत रहे थे। और उसके बाद हम तो जानते ही हैं कि केरला ब्लास्टर जब लोकमेन्यू प्लस शुभम का कॉम्बिनेशन होगा, लोकमेन्यू इधर लाइक अपने मिडफील्ड एंड जो पासिंग गेम दिखाएगा और फिनिशिंग अब लोगों को शुभम की तरफ से दिखेगा। तो कुछ उस तरीके का रहा सिनेरियो, एंड उसी के साथ रिजल्ट आपके सामने है। Yes, in fact, the scoreline, the scorecard also is going to be in front of you guys, and this is what we were talking about. It started off with Genesid getting that 2-1 very close victory against Lokmanu, and this game was nothing, less than a thriller, right? Not in terms of how many goals were scored, but in terms of what was on the line and how the players from Kerala Blasters FC coped up with the pressure and somehow managed to win the game. You could see them under pressure. You could see those nail-biting moments where Shubham, he was literally giving me, panic attacks over there. The way he was just holding his controller, I mean, I don't know what he was trying to do. And all the time he was getting so tensed up. And even you could see that winner that Lokmanu and Shubham scored, right? That one extra pass. Ideally, you would see most of the players just taking a shot like that. But they want to play it so safe. And we haven't seen them, this cautious ever before, and this has worked out. They were so tight. But for Genesid and Varsi, I felt, like you already described, right? They were not that good on the ball tonight, especially in the co-op game. We couldn't see those passes coming in. We couldn't. I think it was just that one goal which was beautifully scored. But ever since, I think it was just Kerala Blasters FC playing better than them. But what's done is done, right? Now we're back to ground zero, where this one game decides the fate of both these clubs, right?
If Kerala Blasters FC they win this matchup, then they're gonna be promoted towards the middle order, mid-table, right? If Yeah. Hyderabad FC win this game, then they're gonna increase or further bolster up the chances of making it to the playoffs in a more comfortable manner. That little cushion they had, that's gonna get a little Yeah. bit more thicker. But if they lose this one, this is where you know the earth comes falling down for them. This is where the pressure just gets unbearable, because then you kind of get yourself into that position where you have to not just go against one or two clubs, you have to win all your games and hope that the others lose their games, and that is not a condition that you want to qualify into the playoffs. So a must-win game for both these clubs, because Kerala Blasters FC, if they win this game, they're going to be sitting at 7 points. Now they would directly head on to the 6th spot, and Hmm. that's literally the edge where you want to be. But I think it's a good place to be in. It's better 6th than being on 10th, because then in the Hmm. next 3 matches that you have, then what are you gonna do? You're gonna be under so much pressure that you're gonna be losing yourself, and they've got some big matches also coming. So that is something both these clubs want to avoid at this point. Now coming down to these two players, right? Shubham the Viper, Warsi, the John Cena. Randy Orton versus John Cena. For all you WWE fans, right? We love Yeah. both these players, and both in WWE and both in fact, also in the eISL. Warsi has always been that player that you could, rely upon when things are really dire, or when maybe Genesis kind of has messed up a game or two. But so is Shubham. Both the reliable players coming out, who's going to make less mistakes, whose defense is going to be better, and who scores the more goals. That will decide the fate, as Kerala Blasters FC from left to right in their black kit, and Hyderabad FC from right to left in their yellow. And this is it. This is the match, folks, that we've all been waiting for. And what a Wednesday it's going to be, TT. बहुत बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट से भरा हुआ अभी तक का रहा है ये दिन। एंड हम लोग तो सोच रहे थे कि आखिरी जो मैचअप है वो होगा सबसे बेहतरीन, वैसे वो हो भी सकता है, लेकिन ये गेम पे जिस तरीके से इंटेंसिटी बिल्डअप हुआ है, उससे ये चीज़ तो पता चल रहा है कि ये आज का पूरा दिन इंटेंसिटी से भरा हुआ रहेगा। बट बॉल कंट्रोल अभी के लिए बहुत शानदार तरीके से मेंटेन करते हुए केरल ब्लास्टर एफसी लेफ्ट टू राइट इधर अटैक करते हुए दिखेंगे आप लोगों को, एंड उसी के साथ राइट टू लेफ्ट इधर दिखेंगे हैदराबाद एफसी। हालांकि दोनों की जो होम किट्स है वो येलो है, तो या अभी के लिए ब्लैक किट पे है केरल ब्लास्टर एफसी एंड येलो किट पे है हैदराबाद एफसी। इधर मौका बनता हुआ एम्बापे बॉल छीने हैं, शूट एंड Wow. फिनिश करेंगे, Wow. एंड इसी के साथ एक गलती हुआ वर्सी की तरफ से जिसमें कैप्टनाइजेशन दिखा, क्योंकि जब वर्सी को बॉल मिला था अगर वो कंट्रोल कर लेते या फिर क्लियर कर देते तो शायद ये नहीं होता, और शुभम कंटिन्यूअसली प्रेशर बना के रखे उनके डिफेंस लाइन के ऊपर। That one heel to heel made that difference, right? Getting that extra space, and getting that pace over there also helped him score that goal. And he knew the moment he succeeded in getting the heel to heel done, that was the moment that he knew it was 1-0 up. And a good start for Kerala Blasters FC. But we have seen, Varsi is a man of comebacks. And that's why I say he's got that never give up attitude in him. If anybody could make a comeback right now, it is Varsi. It's still the early phases of the game. It's still just a goal lead up, and he can do that. But the big problem is the Viper of eISL gonna let him do that? Because once he's already bit him, he's gonna further, you know, just deepen his wounds and poison him down to the point where it all comes falling down for Varsi, just all lying in vain, helpless. But now Varsi's not got time to ponder over that. He's got to win his matches. He's got to win his games, and he's doing exactly, a very calm routine is what we get to see from him. It's a good pass on towards Jazinho, a little bit of a ball roll scoop, finds area with R9, but Shubham has got really tight defense up there. यस, कोई भी डिफेंडर अपने जगह से हिला ही नहीं, और इसी वजह से वो जो स्ट्रक्चर जो खोलने की कोशिश कर रहे थे और सी बार बार पास करा के वो उनका कामयाब नहीं हुआ। बट इस बार बहुत शानदार तरीके से
तोड़ते हुए थे डिफेंस लाइन को, लेकिन एक चार्ज एंड उसी के साथ एडर मिलिटाओ बॉल जीतने में कामयाब रहे। और इसी जगह पे देखिए जो पास उन्होंने लाइक थ्रू बॉल खिलाने की कोशिश था टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, वो शायद पहले से ही सोच के रखे थे कि यस पास आएगा तो मैं खिला दूंगा, क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत पहले से रोनाल्डिनियो ऑफसाइड पोजीशन पे मौजूद थे। तो ये कभी कभार हो जाता है मोमेंट, लेकिन वैन डे सार सेवियर, वो अगर ये टच नहीं करते तो शायद इधर से कमबैक का जो राह है वो बंद होता हुआ दिखता, लेकिन इसी वजह से वो टीम ऑफ द ईयर आइकन में आए हैं और उनको यूज भी किया जा रहा है उनके इस अनबिलीवेबल सेव की वजह से। My goodness, do you see how he passed there? No, that vision coming in from Shubham. Oh my God. Varsi, he's got to do something. He's got to wake up to his senses because Shubham is... Okay. All right. No, that was a little overwhelming, but the way Shubham is playing, especially, we could see we could take a quick gander at their formations, right? 4-3-2-1, and both the players going defensive. So one thing that we've seen is Shubham has been tight on his defense. He's not getting his line further way up. In fact, he's just waiting to go on the counter attack. And once he gets that, what he's doing is he's building up his passing routine there. Just constantly recycling the ball. But right now, good chance for Varsi. He went for the step over, but Virgil van Dijk did not go for the tackle. Instead, he went back, tried to cover up his path because he knew that he's going to take a shot from there. Wasn't green timed also. As a result, all right, so we have seen this routine happen quite a lot where players kind of tend to give a long pass there, cross it over to Ruud Gullit, and he goes for the header. But now Mbappe has broken free, and this is looking disastrous as he scores one more. Kerala Blasters FC 2-0 up, and Shubham, he has bit Varsi yet again. Poisoned over here, Varsi. He needs that antidote. How is he going to find that? He's playing ultra defensive, but now he's got to go a little all out. He's got to go a little PAPL. He's got to sweat it out, be ratty if he needs to. But for doing that, he needs to find out a way to breach through the defenses of Shubham, and that he's not letting happen. And Shubham, he's been quite crafty, quite innovative with his passes, and he's been playing FIFA on a whole different level tonight. ये कमबैक लाजवाब था। अभी भी हम लोगों को अगर बात करें इस पूरे मैचअप को लेके, तो ये पूरा मैचअप 270 मिनट्स का काइंड होगा टोटली, 90 मिनट्स इनटू 3, और उसमें से अभी तक अगर देखा जाए पहला 30 मिनट्स छोड़ के अभी तक बॉल डोमिनेशन, गेम डोमिनेशन केरला ब्लास्टर्स की तरफ से दिखा है, और वो अभी भी कंटिन्यूड है। 2 गोल्स ऑलरेडी आ चुके हैं केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से, एंड आखिरी जो 50 मिनट मिलेगा हैदराबाद एफसी को, क्या वो एटलीस्ट इधर से इक्वलाइजर भी दाग सकेंगे, क्योंकि 2 गोल फिर से दागना वो बहुत ज्यादा टफ होने वाले। वी नो कि इसके पहले बहुत सारे कमबैक्स दिखे हैं, लेकिन वो कमबैक इस बार शायद होगा लाजवाब। वारसी फाइनली 1 गोल के साथ, बहुत क्लोज था हालांकि ये गोल। Shubham did everything he could do in his arsenal, even went for the keeper dive charge, but did not work out. Varsi, he's a man on a mission, and like I said, right, he's going to be relentless. He's kind of that tenacious player that you would want in your club, and cannot really rule him out. One more goal, and he gets that antidote he needs, and then we know Varsi's been a man of comebacks. He can do that. He made some adjustments and seems like it worked out. Just piercing through Shubham's defense, but he's got to do that again. And Shubham now a little coil back again. He wants to strike. He's making the right strides there, looking for a cutback. Oh, the ball almost was a lose for a moment. And now Hyderabad FC get themselves on it. Nice driven pass. Coming there, beating a lot of defenders, but not a lot of men were there on the attack. And now with Cap de Villa trying to get in, but Virgil van Dijk, he's been using Shubham him into perfection. We've seen multiple
kind of saves being made. One where he has kind of blocked that shooting lane. One where he charges in to block that passing lane. Shubham had been impressive in his defense so far, till the point Varsi scored one in. And now we've come to the end of the first half, TT, with such a thriller of a match in front of us. KBFC are 2-1 up ahead, but come the second half, anything could happen. या कुछ भी इधर हो सकता है फॉर श्योर. जिस तरीके से गेम गया, बट पोजीशनिंग के मामले में ऑब्वियसली केरला ब्लास्टर एफसी काफी कहीं ज्यादा आगे, लेकिन वॉर्सी को कुछ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस की जरूरत है. वो कुछ ग्लोरियस मोमेंट्स की जरूरत है जिसपे वो गोल स्कोर करे. अदरवाइज बॉल कंट्रोल या फिर गेम का जो कंट्रोल है वो तो अभी तक केरला ब्लास्टर्स की तरफ से ही दिखा है. लेकिन वही बात है कि आपको जितना छोटा मौका मिल रहा है उस मौके को आप भुना पाते हो कि नहीं, वो बेहतरीन तरीके से भुनाते हुए दिखे हैं अभी तक वॉर्सी. तो उनको वही एक और मौका चाहिए जिससे कि वो इक्वलाइज करें, क्योंकि इक्वलाइज करेंगे फिर सब कुछ सेम जगह पे एक बार फिर से आ जाएगा. बट अभी के लिए हो चुका है शुरू इस पूरे मैचअप का आखिरी हाफ, आखिरी 45 मिनट्स जिस पे लड़ाई चल रहा है. एंड इस लड़ाई पे थोड़ा सा आगे दिख रहे हैं केरला ब्लास्टर एफसी. Just a little ahead. That's what I would say, because now I'm pretty sure both these players have figured out what to do next. And Shubham needs to score a few more goals and then go ultra defensive, go for a 5-4-1. But right now, Varsi seems relentless. He wants to get that goal. A good pass intended towards Ronaldinho. Nice cutback there. But Shubham's defense again on their toes. Does not let it happen. But Varsi is going to keep pressing. You know, that pause he took to make those changes. Varsi, he feels different on the ball right now. He feels much better. But Shubham, nice play log. Gets it on towards Jairzinho. With Eder Militao, pass it towards Bellingham. From here onwards, did have a little bit of an option to, you know, kind of force out an attack from that right wing, utilizing Kimi. But now a little bit of a battle ensuing in the midfield, and we could see that. Oh, this should be offside. This should be an offside, and indeed it is, because. You know, that would be absurd if Mbappe kind of broke through like that and went on to score a goal, but suddenly could be a sucker punch. Theo Hernandez, a nice ball roll scoop. Good opener pass towards Mbappe, but could not seal the deal over there. Hyderabad FC failing to score. And the question is, can Shubham punish him for that? And Shubham has so far TT had that very, very calm routine, right? He just constantly keeps passes and wants to build up his play. अभी देखिए जिस तरीके से ये पूरा सिचुएशन चल रहा है, इधर से कुछ भी कहना बहुत टफ है. बट या क्या करेंगे क्या नहीं वो अभी समझना भी बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक बॉल कंट्रोल रखे है शुभम, उससे एक चीज़ तो लग रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो उनके हाफ पे बॉल जाए, एटलीस्ट केरला ब्लास्टर एफसी के हाफ पे. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इधर देखते हैं हैदराबाद एफसी की तरफ से, तो हैदराबाद एफसी बार बार स्ट्रगल कर रही है कि बॉल कंट्रोल में रखने के. एंड यही जगह पे अटैकिंग थर्ड से थोड़ा जस्ट पहले ही बॉल जो है वो उनके कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं. हालांकि ऑफसाइड हो जाएगा इधर. एक कोशिश था थ्रू बॉल के साथ अटैक पे जाने की, बट वो हो नहीं पाया. बट फिक्सेस आपको क्या लगता है, क्या हैदराबाद एफसी एंड वॉर्सी स्पेशली लाइक उनको क्या अपने मिडफील्ड पे कोई चेंजेस लेके आना चाहिए, या फिर वो फॉर्मेशन चेंज करके मिडफील्ड पे प्लेयर्स को इंक्रीज करना चाहिए? क्योंकि उनका जब भी अटैक हम लोगों को बनता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है डायरेक्टली वो अपने डिफेंस के ऊपर थोड़ा बॉल खिला रहे हैं, एंड उसके बाद विंग थ्रू डायरेक्ट पेस ले रहे हैं, लाइक फुल पेस से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मिडिल से एक रन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें मुझे लगता है कि मिडफील्ड पे थोड़ा और अगर एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए तो शायद मिडफील्ड कंट्रोल मिलेगा, तो अटैक को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा. आपको क्या लगता है? I think a few tactical changes need to be done, especially, you know, you could see 4-3-2-1 and ultra defensive style of play being emulated by Varsi over here. And that sort of
kind of stops you from getting so much players involved in the midfield, right? They kind of tend to be on the back foot a little bit, and you know that Shubham has been playing those beautiful through passes also, and could even get more deadly. And that is a constant threat that's poking at the back of the mind of Varsi at this point. But you know, this was one major timeout that he had taken, but now he'll take a shot and he will score out of this one. And suddenly we see things tied up. A beautiful pass towards R9, and he makes no mistake in scoring. And just like that, you know, these are the defense splitting passes that Shubham should have been careful about, and might have to kick himself in the feet, because Varsi, he has done it. You know, I always have that thing in the back of my mind that yes, वारसी है तो मुमकिन है, और हैदराबाद एफसी के लिए इन्होंने फिर से कर दिखाया है. So at this point, you know, Varsi I think could you know, be looking forward to score the winner, but Shubham has been a little bit unlucky also. His timing has been you know, not been appropriate, has been caught on that offside trap multiple times, and Varsi has also capitalized. And suddenly a fresh breath of energy has been instilled into this game. Now Shubham wanting to capitalize on those openings, but realized that Varsi instantly got his men behind, and now Varsi is back on his attack again. Yes. Varsi जिस तरीके से सेकंड गोल दागे, उसके बाद कहने की मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स जियो हर्नांडेज. एंड जो चेंजेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है बीचों बीच से. रोनाल्डो, बट बॉल कंट्रोल चला गया, लेकिन बॉल जीतेंगे. क्रूशियल पोजीशन पे बॉल जीतेंगे. एंड ये फिर से गलत पास. देखिए, इस सब जगहों से अगर आप बॉल जीतते हो तो कोशिश यही करना चाहिए एटलीस्ट वो गोल पे फिनिश करे, एटलीस्ट शॉट ऑन टारगेट रहे. लेकिन अगर आप पास दे दोगे तो उसका फायदा नहीं मिलने वाला. और 10 मिनट अगर यही स्कोर लाइन रहा तो हम लोग को पूरा मैचअप ड्रॉ पे खत्म होता हुआ दिखेगा. लेकिन अगर कोई भी गोल स्कोर करते हैं तो शायद वो हम लोगों को दिख सकता है कि वो विनर हो. बट आखिरी कुछ मोमेंट शुभम अटैक पे. शुभम अभी भी बॉल है उनके पास. हकीमी टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो. बहुत ज्यादा मुश्किल का सिनेरियो, लेकिन नहीं. रोडोलिच के पास अगर आप जाओगे वो झट से आपको यही बोलेंगे, बॉल देके जाओ. Oh, nice run triggered by Varsi. And no TT, I don't want it to be leveled. I want to see a decider, and this could be one. Oh, he has done it. Maybe Kerala Blasters FC. Oh, Shubham, you beauty. How did you pull this one off? Could be a winner. Could be a potential one. Varsi might have just taken that sucker punch there. Shubham was looking ever so attacking. He was desperately trying to give those through passes. There were multiple instances where he failed, where it was going offside. But once it mattered, when it did, he struck that hammer, and it went right through Varsi's heart, piercing it wide open. Blood splattered all out. And now, in the dying phase of the game, what can Varsi do? He fainted, but can he wake up once again? For his supporters, for his club, for himself on a personal level. Because this was nothing short of a beauty that Shubham just did. That last moment, heel to beat the keeper. It takes sheer cojones. And this man has had a lot of it. Oh, what was that? वाओ, आखिरी 2 मिनट क्या वारसी कर पाएंगे. What a game this was. वारसी with the equalizer, and उसी के साथ लास्ट मोमेंट ड्रामा चलता हुआ. eISL सीजन 2, I think one of the best game अभी तक के देखे गए, जिधर दोनों ही सेम तरीके से सेम लेवल पे परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं. The 90th minute drama ensuing, and we still have one more attack to go. Shubham has to go all out. He has to do it.
does not have a lot of time remaining. He has to make this attack count and it fails over here. The final whistle blows and it ends in a draw. Varsi, he was not John Cena, he was Undertaker. That never give up attitude coming in the last moment does the magic. Binds Shubham to a spell and takes a point away from them. And Kerala Blasters, Hyderabad FC, both are going to be taking home 1 point each. What a match it was, guys. What a match. बट शुभम बहुत ज़्यादा नाखुश रहेंगे क्योंकि देखिए हैदराबाद एफसी के लिए तो प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि वो एक पॉइंट लेके जाएंगे फिर भी उनके पास गेम्स बचे हुए हैं और वो अभी एक अच्छे खासा ठीक ठाक पोजीशन पे भी है लेकिन जो 2 पॉइंट्स इधर ड्रॉप हुए केरला ब्लास्टर एफसी से वो 2 पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा उनको याद आएगा तब जब प्लेऑफ्स के आखिरी 1-2 दिन बचा हुआ रहेगा बट या परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए लाजवाब गए ये गेम इवनली मैचअप जैसे कि हम लोग सोच भी रहे थे ये मैचअप शुरू होने से पहले कि शायद ये ड्रॉ पे खत्म हो यस कुछ उसी तरीके से खत्म हुआ लेकिन लास्ट मोमेंट ड्रामा इस तरीके से होगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था और ये जगह पे क्या शानदार हिल टू हिल रहा और ये सेम एरिया पे हिल टू हिल करते हुए हम लोग बहुत सारे गोल्स देखे हैं जिधर से राइट साइड में कट के लेके जाते हैं जिधर गोलकीपर हक्का बक्का हो जाता है कि वो गोल पकड़ पाएंगे कि नहीं और उधर से एक शॉट आता है लेकिन ये एरिया पे किसी ने भी नहीं सोचा होगा इतना जल्दी अटैक पे चले जाएंगे और ये स्टेप ओवर हॉलैंड उनके फिजिक के साथ सबको दूर हटा दिया स्टेप ओवर के साथ और उधर एक पूरा खाली एरिया मिला और मिला गोल ये मैच मैं कभी नहीं भूलने वाला I don't know what to say at this point. You know, I think I have been taken over, spellbounded by Varsi. And how does he manage? How does he manage, you know, to keep such composure? I mean, a request, if we could have him over for an interview, I would like to do this. I would like to talk to Varsi at this point, right here, right now. The scoreboard. Nothing separating these two clubs. Nothing really. And at this point, this matchup, I'm pretty sure everybody was at the edge of their seats. Anything could have happened. That last moment, late minute drama that we got to see. Oh, this was intense. It was intense. A nail biter, a photo finish. But nobody could come out as the victor. Nothing to separate these teams as we take a look at the MVP. Such a tough job to decide who it's going to be and has to be Varsi. Well done production. I think quite deserve it because Shubham, he must be gutted with how he let that last goal go in. Varsi knew he had that one chance and he had to hit a home run. And that he did. Scored the goal. And for his fans, for himself, you know, it's a draw at the end of the day, but he's going to take it as a victory. You know, not every day, especially you make comebacks like that. You're always getting behind a goal and somehow having that mindset to come back in, that is something Varsi can only produce. And he's done that again tonight, folks. बिल्कुल एंड आई थिंक उसी के साथ अभी वक्त हो चुका है और हमारा पहला मैचअप भी खत्म हो चुका है बट जो नेक्स्ट मैचअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा बट उसके पहले मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद